What is spirituality? Many people have this misconception that you have to leave your house, your families, you have to renounce everything, then you are spiritual. I tell you, this is not the way. Everybody by birth is spiritual. What is spirituality? Before knowing this, we should understand what does it mean to be spiritual. If you see life from the bigger, broader perspective, every single person on this planet is spiritual. What is being spiritual? To be happy, to be in peace, enthusiastic, energetic, calmer, caring and sharing nature, all inclusiveness. This is what is being spiritual. यदि हम इसको देखते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होने के लिए अध्यात्म की ज़रूरत है. माने क्या? टू गेट एस्टैब्लिश इन अवर नेचर, टू बी स्पिरिचुअल वी नीड स्पिरिचुअलिटी. What is spirituality? The processes, the techniques, the tools which help us to be in our nature. That is where meditation, breathing techniques, pranayam, they play a major role in our life. When we meditate, stress goes out. All the distortions that we experience in life, they vanish. जैसे बोलते हैं संस्कृत में मल विक्षेप आवरण. That is, mala means dirt, mental or physical dirt, stress. Vikshep, distortion, and avran means the sheets that we wear. Different roles we play, different thing we do in our life, so we accumulate past impressions. And because of all these things, we move away from our nature. And this breathing techniques, meditation, spirituality helps us to uplift our spirit naturally and to be happy without any condition. And to be spiritual, we don't have to live anything. Just live fully. That is what is needed. ना घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना पर्वत के गोद में जाने की ज़रूरत है. कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है. भगवे वस्त्र परिधान किया हुआ व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है. जो फैमिली के साथ रहते हैं वो भी आध्यात्मिक हो सकते हैं. जो अनमैरिड है वो भी आध्यात्मिक हो सकते हैं. 60-70 साल के आयु के व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकते हैं. एक छोटा बच्चा जो खेलकूद करता है वो भी आध्यात्मिक हो सकता है. Nobody is devoid of spirituality. Everybody is spiritual by birth, by nature. तो ये जो रॉन्ग नोशन है हमारे सोसाइटी में, मिसकंसेप्शन है अध्यात्म को लेकर कि आध्यात्मिक होने के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है या बहुत कठिन पड़ता है ये चीज़ें करने के लिए, ये सरल, सहज, तरल एक तरीका है जीवन जीने का. एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. सी ओनली इफ यू रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक लाइफ वी मे एक्सपीरियंस लग्जरी एंड कंफर्ट इन लाइफ, बट वी मे नॉट गेट पीस, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस दैट वी आर लुकिंग फॉर. सो इफ वी वांट टू कीप द लाइफ बैलेंस, बोथ थिंग्स आर नीडेड. Often people think that spirituality is in conflict with commerce. But Gurudev Sri Ravi Shankar ji says it is not in conflict with commerce. In fact, spirituality is complementary to commerce. जो भी हम भौतिक जग में कमाते हैं, संचय करते हैं, उसका विनियोग कैसे करना है, उस संपत्ति का उपभोग कैसे मस्ती में आनंद में लेना है, सबको समा के अपने अंदर, यही अध्यात्म हमें देता है. So let me tell you one thing. Being spiritual is not difficult. Now we have to remove this wrong notion from the society that it's not my cup of tea. Everybody can experience spirituality because by nature we are spiritual. आध्यात्मिक होना या अध्यात्म को फॉलो करने से क्या होता है, जीवन में जो भी दुविधा है वो सुविधा में बदल जाती है. सिर्फ नाम और रूप के पीछे भागना, भौतिक जग में पीछे भागना चीज़ों के जीवन असंतुलित होता है. और अध्यात्म हमें वो जोड़ देता है जीवन में, जिससे जीवन संतुलित होने लगता है. मेनी टाइम्स वी हैव सीन पीपल टॉकिंग दैट स्पिरिचुअलिटी इज आउटडेटेड थिंग. ओनली एजेड पीपल कैन डू मेडिटेशन, दे कैन डू सम प्रैक्टिसेस. बट आई टेल यू, इफ यू वांट टू बी वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, enthusiastic, multitasking personality, there is no other way than experiencing spirituality, meditation, breathing techniques. It's not outdated thing. Spirituality should become fashion of life. So, are you not spiritual?